शं नो वरुणः। One UAV has detected an enemy warship operating 150 nautical miles. Hands to action station. Engage Brandy Alpha with the most missile. Engage. Ready for launch. Launch ready. India, a strong, resurgent and vibrant nation. Matched by a young and dynamic Navy. The Indian Navy proudly shoulders the responsibility of our nation of ensuring safe and secure seas. A strong nation needs a strong Navy for ensuring peace. Geopolitical realities are hard to dismiss. The challenges are many, with the region combating religious strife, terrorism and border disputes. The Indian Navy has a vital role to play in ensuring peace and stability. Combining power and mobility, the Indian Navy plays a vital role to perfection in all spheres and dimensions of warfare. Be it surface, subsurface, air, and space dimension. Combat readiness at all times is the hallmark of the Indian Navy. It's a multi-dimensional force which has a formidable footprint in the Indian Ocean region. India's location in the Indian Ocean is unique. So is the role of the Indian Navy. The seas are vital for food, natural resources, energy, trade and transportation. A world-class Navy backs the economic aspirations of a resurgent nation. Always on the prowl, never lets down its guard even for a second. India's immediate geostrategic environment is synonymous with the Indian Ocean region, but its influence is carried much beyond, making it truly a blue water navy. The mandate is clear-cut. Maintain stability and security in our area of operations in order to enable and catalyze economic progress and national consolidation. India is now firmly on the path to economic resurgence. Fulfilling the aspirations of a billion-plus population demands unhindered access and usage of the seas around us. With 90% of trade by volume and bulk of our energy imports traversing the seas, maritime security is central to India's overall development and economic well-being. Maintenance of peace in the Indian Ocean region is a key national security imperative. The Indian Navy has the strategic presence in the region, which is key to stability in the region. The seas around us are gaining newfound importance as each day goes by. And there is no doubt that the current century is the century of the seas. India is essentially a maritime nation with a natural outflow towards the seas, and the country sits astride busy sea lines of communication
over which nearly 100,000 ships transit every year. We have vast maritime interests, and the responsibility of protecting these interests falls squarely on the shoulders of men in white uniform, because it is the responsibility of the Indian Navy to ensure that India's maritime interests, which have a vital relationship with the nation's economic growth, are allowed to develop unhindered both in peace and war. India's maritime interests face myriad challenges. The tasks are cut out: surveillance and presence to ensure deterrence, combat readiness for a decisive victory in case of war, keeping territorial integrity intact, safeguarding national maritime interests. The Indian Navy is a multi-dimensional force, always mission ready. The combat fleet and operational authorities remain focused on their missions and are always ready. The induction of INS Vikramaditya has added a new dimension to the operational edge of the Navy. The new flagship has added to the strength of the Indian Navy. With a displacement of 44,500 tons and height of 20 decks, the ship is truly awe-inspiring. An engineering marvel. With integral MiG-29K fighters and Kamov 31 helicopters, INS Vikramaditya symbolizes the Indian Navy's professionalism and capabilities as a credible blue water navy. With induction of INS Chakra nuclear submarine and impending trials of INS Arihant, a new dimension of prolonged underwater sustenance is added. The under-construction Scorpene-class submarines will enhance the conventional deterrence and punch to our underwater capabilities. INS Kolkata and INS Kamorta are the latest additions to the Indian Navy's arsenal. The commissioning of these two ships has showcased our shipbuilding industry's coming of age. INS Kolkata exemplifies our naval might and our indigenous capability to design and build the most potent of warships. With a very large indigenous combat component, INS Kolkata is the new face of the Indian Navy's multi-dimensional surface capability. The ship is packed with the most sophisticated state-of-the-art weapons and sensors, including vertically launched long-range surface-to-air missiles and the BrahMos surface-to-surface missile. India's biggest indigenous warship, the under-construction aircraft carrier Vikrant, would help the Indian Navy match the world's leading navies, also making it one of the few to operate two aircraft carriers globally. In true national spirit, the self-reliance program of the Navy is well entrenched, with significant indigenization of platforms, weapons, sensors and equipment. The Indian Navy is a multi-dimensional networked force which is combat ready to take on any challenges in the maritime domain in the Indian Ocean region. The blueprint of the future Indian Navy is firmly anchored on self-reliance and indigenization, and currently we have 41 ships and submarines under construction
in various public and private shipyards within the country. It is our endeavor to progressively increase the indigenous content so that future warships can be 100% made in India. शम्नो वरुणः Own UAV has detected an enemy warship operating 150 nautical miles. Hands to action stations. Hands to action stations. Engage Brandy Alpha with BrahMos missile. Engage. Ready for launch. Launch ready. जीवंत भारत है ये, नई उम्मीदों से भरा, परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा। और ये है एक युवा नौसेना, शक्तिशाली, सतर्क, राष्ट्र की अपेक्षाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई। नौसैनिक शक्ति का अर्थ सिर्फ युद्ध लड़ना भर नहीं होता है। देश के आर्थिक हित महत्वपूर्ण होते हैं। समुद्री व्यापार मजबूत अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, क्योंकि भारत के कुल व्यापार का 90% हिस्सा समुद्र के जरिए होता है। भारत एक समुद्रवर्ती देश है, जिसके भविष्य का सीधा संबंध हमारे आसपास के समुद्रों से सीधा जुड़ा हुआ है। हमारी समुद्री संपदाओं की रक्षा करने की भारी जिम्मेदारी नौसेना के कंधों पर है, और हमारे जहाज़, पनडुब्बियाँ और हवाई जहाज़ हिंद महासागर में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारतीय नौसेना अपनी जवाबदेही बखूबी समझती है। जवाबदेही है दुश्मन को अपने तटों से दूर रखना, युद्ध की स्थिति में निर्णायक विजय प्राप्त करना, क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखना, राष्ट्रीय उद्देश्यों और सामुद्रिक हितों की सुरक्षा करना। भारतीय नौसेना एक बहुआयामी बल है, जो हर तरह के मिशन के लिए हमेशा तैयार रहता है। Now, fire! INS विक्रमादित्य भारत का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है। ये भारतीय नौसेना की सामुद्रिक क्षमताओं और पहुंच की नई पहचान है। MiG-29 के युद्धक जहाजों और कमोव हेलीकॉप्टरों से सुसज्जित इंजीनियरिंग का खूबसूरत उदाहरण INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना के पेशेवर अंदाज और क्षमता का परिचय भी है। समुद्र में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए जरूरी है आसमान में भी अपनी मारक शक्ति बनाए रखना। जब युद्धक जहाजों और पोतों से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी जाती हैं, तो दुश्मन दूर रहने में ही अपनी भलाई समझता है। शांति का समय हो या संघर्ष का, सामुद्रिक निगरानी सामुद्रिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्री तट रेखा और 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। भारतीय नौसेना इसकी सुरक्षा जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा सजग, सचेत और चौकन्ना रहती है। INS चक्र और जल्द ही बेड़े में शामिल होने वाली पारंपरिक स्कॉर्पियन पनडुब्बी और परमाणु शक्ति से सुसज्जित स्वदेशी पनडुब्बी INS अरिहंत से
भारतीय नौसेना की मारक क्षमता सतह के नीचे भी प्रबल बन जाएगी। भारतीय नौसेना ने हमेशा आगे बढ़ना सीखा है। भविष्य के लिए क्षमता निर्माण योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। स्वदेशीकरण पर जोर है और भारतीय शिपयार्डों में निर्माण की गतिविधियों की नई चहल पहल है। देश के विभिन्न शिपयार्डों में 41 जहाजों और पनडुब्बियों का निर्माण एक बड़ा काम है। भारतीय नौसेना नए जहाजों, विमानों और पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ डॉकयार्ड में बुनियादी संरचनाओं के विस्तार और सुधार पर भी ध्यान दे रही है। भारत का पहला पूर्ण सैन्य संचार उपग्रह रुक्मिणी भारतीय नौसेना की उपलब्धियों का एक सुनहरा अध्याय है। नौसेना की बहुस्तरीय आवश्यकताओं के लिए बने इस उपग्रह की मदद से अब युद्धपोतों, पनडुब्बियों और युद्धक विमानों तक आदेशों को तुरंत पहुंचाया जाता है। ये है नेटवर्क आधारित संचालन वाली भारतीय नौसेना की असली ताकत और वर्चस्व की नई गाथा। ये अत्याधुनिक युद्धक जहाज, ये गरजते विमान और ये मारक पनडुब्बियां भारतीय नौसेना को मुकाबले के लिए तत्पर बनाए रखने में मदद करती हैं। नई क्षमताओं का समुचित उपयोग, खर्चों पर नियंत्रण और सुरक्षा भावना को बढ़ावा देने के साथ ही भारतीय नौसेना ये भी सुनिश्चित करती है कि हमारे समुद्र सुरक्षित रहें, निरापद रहें। जब परिस्थितियां अनोखी हों तो प्रतिक्रियाएं भी अनोखी होनी चाहिए। नौसेना के ये विशेष लड़ाके दस्ते मार्कोस, मरीन कमांडोज अपारंपरिक लड़ाई में माहिर हैं। भारतीय नौसेना पड़ोसी देशों के बीच न केवल सशस्त्र बलों और राष्ट्र की संगठित ताकत का प्रदर्शन करती है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत के राजनैतिक दूत की भूमिका भी अदा करती है। दूसरे देशों के साथ मिलकर किए जाने वाले नौसैनिक अभ्यास दोस्ती और विश्वास बढ़ाने के लिए ही किए जाते हैं। भारतीय नौसेना का मंत्र है अपने हर काम में, अपनी हर कोशिश में पेशेवर श्रेष्ठता साबित करना। और इसे हासिल करने के लिए नौसेना के अधिकारियों और नौसैनिकों को अत्याधुनिक सिमुलेटरों के जरिए युद्ध में अजेय रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। युवा आबादी की आकांक्षाओं के साथ एक उभरती अर्थव्यवस्था वाला भारत दुनिया के साथ बराबरी का बर्ताव करने में विश्वास रखता है और उसका साथ दे रही है निरंतर उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को हासिल करती एक शक्तिशाली और प्रभावशाली नौसेना। ये है भारतीय नौसेना, उभरते राष्ट्र का सागर रक्षक। Is a multi-dimensional force which has the responsibility to uphold our maritime interests, which are vital for our economic growth. I would like to tell the youth of this country that if you have the desire to serve your country with pride, if you have the spirit of adventure in your heart, and you're looking for a challenging career to serve under the surface of the sea, on the surface or in the air, then a career in the Indian Navy is the right career for you. The Indian Navy, ensuring secure seas for a resurgent nation.